أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وعلى آله وصحبه يا سيدي يا برادران اسلام شدایان دین وطین شمع رسالت کے پروانوں عاشقان اولیاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حمد و ثنا، تمام عبادات اس ذات کے نام جو اس کائنات کے ذرے سے لے کے عرش کی بلندیوں تک ہر شے کا خالق و مالک ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو غفور ہے، جو کریم ہے۔ ہم اسی کی آگے سجدہ ریزیاں کرتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ درود و سلام بے حد لامحدود اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو وجہ پاسبان آدمیت ہے، جو آواز رحمانیت ہے، جو نور الہیت ہے۔ میں اپنا ہی ایک شعر قبلہ ہزاروی صاحب کی نظر کرتا ہوں اور حافظ صاحب حجی صاحب کو اور فیضی صاحب کو اسپیشلی۔ جمال حسن نبی دل پہ اقبال کرتا ہے، جمال حسن نبی دل پہ اقبال کرتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہر سانس کو پاک کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایاز بھی سر کو جھکا کے یہ دعا کرتا ہے، مانگ جو کچھ مانگنا ہے میرا رسول عطا کرتا ہے۔ It is great honor for me to have this beautiful evening to celebrate Miraj al-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. I'm really thanks to Fadi Saab and their colleagues who arranged this beautiful gathering only to celebrate to attain the Allah's and Allah's beloved Prophet love. And in the beginning I want to quote one hadith, and that relates to the greatest status of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. The group of the companions were sitting, it's my imagination, they were sitting in the Masjid Nabawi and they were discussing about the status of and the ranks of the different prophets. And one of the companions said, Allah subhanahu wa ta'ala exalted and bestowed the blessing and awarded with the rank of Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Ibrahim Khalilullah. That is the rank of the title. Another companion said, Sayyidina Allah subhanahu wa ta'ala awarded with the ranks to the Prophet Moses, Sayyidina Musa alayhi salam, Musa Khalilullah. Allah spoke direct to the Musa, Prophet Muhammad, Prophet. Another, the best and the loving servant and the companion of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He said, Allah subhanahu wa ta'ala awarded with the gift and with the rank to the Prophet Isa alayhi salam, Isa Ruhullah and Kalmatullah. In the end, another prophet, another companion explained, Allah subhanahu wa ta'ala awarded the Prophet Adam Safiullah. In the meantime, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam approached to the companions and said, I have heard your conversations and there is no doubt at all Allah subhanahu wa ta'ala awarded these ranks. Allah awarded to Sayyidina Ibrahim, he is worthy of that rank. And Allah subhanahu wa ta'ala awarded to Sayyidina Musa, he is worthy of that rank. Allah ta'ala awarded to Sayyidina Isa, he is worthy of those ranks. And listen carefully, I am the Habibullah, the most beloved personality in the face of God, the most loving personality and the leaders of the Imam of all prophets. But I am not proud of it. And listen more, on the day of judgment, the Luwai Hamad, the special flag, will be in my hand, and the entire human race, including all the prophets, they will be under that banner. And I am not proud of this. And listen more,
On the day of judgment, Allah subhanahu wa ta'ala allowed me, I will be the first to enter the door, to open the door of the paradise. But I am not proud of this. We people are lucky that we are the real seeker and lover of the Prophet Muhammad. And it is our duty, and it is the part of our iman, that we should practice according to the Prophet's message, Prophet's willing, Prophet's desire, and the Prophet's companions who have practiced in the days of the Prophet. It's my iman that you will get the real picture and reality of the Almighty. I'm really thankful to Brother Fazli who arranged, and his colleagues arranged this beautiful programs. And before me, Hazrat Allama Hazari explained in details about regarding the miracles and special miracles, the greatest miracles of the Prophet Muhammad. And it is our belief as a Muslim, as a seeker, as a lover, as a servant, that we should just keep these things in your mind, in your heart, if you need the reality. So it is, I'm also belong to the Sufi class, and my grandfather, the founder of the Moda Sharif, who spent, as earlier Malik Sahib explained, he spent 80 years at one place, and he never moved just for the tabligh. He spent there, and all time, whenever the person comes to see him, to visit him, he just invite, sit, and don't waste your breath when you inhale and exhale. Remember Allah subhanahu wa ta'ala. With the remembrance of Allah, Allah will give you the real love and the light of the Prophet. So he was on the third degree of the zikr. Zikr by the secrets. In every soul, in every breath of Khwaja Muhammad was blessed by the blessing of the zikr. And that is the way of the Sufi. Sufi never show that I am a Sufi. When somebody comes to visit the Sufi, the blessing and the inhaling and the Sufi's expression will change the internal word of the people who visit the Sufi. I belong to that Sufi. Khwaja Muhammad Qasim Maulvi, he practiced the Naqshbandi order, and that order goes to the first Khalifa, Sayyidina, first Khalifa of Prophet Muhammad Sayyidina Abu Bakr Siddiq. So my brothers and sisters, you are lucky that you here to listen regarding the miracles of the Prophet Muhammad. And I want to quote another hadith regarding, because the Prophet Muhammad is mercy for all universe and blessing for all universe. And one Ashabi said, so asked the Prophet, trust the disbelievers. Trust the disbelievers. And the Prophet replied, I have been sent not to trust, I have been sent for the mercy and blessing for humanity. So we are lucky that we are the lovers and the real servant of the Prophet. मेरे लिए और आपके लिए ये बड़ा इनाम है, ये बड़ा बड़ी बरकत है कि न्यूजीलैंड में यहाँ पे इस मादियत मटेरियलिस्टिक लाइफ में हम दुनिया के कामों को छोड़कर आज नबी रहमत की बारगाह में अपनी अकीदतों का इजहार करने के लिए आए हैं। उस नबी से वफा करने के लिए आए हैं जो नबियों का सरदार है, जो नबियों का सरदार, रसूलों का सरदार और सैयदुल मुरसलीन है, जो कायनात के लिए रहमत बनकर आया है, हर दौर के लिए, हर ज़माने के लिए रहमत बनकर आया है। जिस तरह मेरे नबी का नाम आला है, जो प्रेज ऑल द टाइम, इसी तरह मेरे नबी का काम भी आला है, मेरे नबी का देखना भी आला है, मेरे नबी का बोलना भी आला है। जिस तरह हज़रत अल्लामा ने फरमाया कि मेरे नबी के आने से पहले भी मेरे नबी के मौजज़ात का तज़किरा होता है, मेरे नबी के ज़िक्र पाक का तज़किरा होता है। क्यों ना होता कि रब कहता है ये वो महबूब है जिससे मैं शिद्दत के साथ प्यार करता हूँ, जिसके साथ मैं मोहब्बत करता हूँ, तो फिर उसका स्टेटस, उसका मकान, उसकी वैल्यू, उसका कैरेक्टर, उसकी शान जो है मेरी सुनों से भी बड़ा होगी और कायनात के तक तक दुनिया ये बसती रहेगी, इल्म वाले आते रहेंगे, अपने इल्म का ज़ौक़ से अपना बयान करते रहेंगे। खुदा की कसम मेरे आका की मोहब्बत का फैल उसी तरह जारी रहेगा। हम उस नबी से वफा करने वाले मैं वो तस्करा बयान करने लगा हूँ, सैयदना मूसा जिसको कुरान में रब्बे कायनात ने सबसे ज्यादा उनका तस्करा हुआ है,
गाइडेंस फॉर ह्यूमैनिटी, वो कुरान अजीम जिसका एक एक लफ्ज जो है सरापा रहमत वाला है, उस नबी रहमत के सीने में उतरता है। उस कुरान ने रब्बे कायनात ने ये ऐलान भी फरमाया, और उससे पहले जो मूसा को अता की गई तौरात, द ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें भी रब्बे कायनात ने द कन्वर्सेशन बिटवीन गॉड एंड मोसेस, मैं उसका एक पहलू आपके सामने रखना चाहता हूं कि वो क्या पैगाम था। मेरे नबी की अजमतों का तज़किरा था, मेरे नबी की आमद का तज़किरा था, मेरे नबी के साथ निस्बत करने वाली उम्मत का तज़किरा था। आप और हम कितने आला है, इसलिए कि हम नबी के गुलाम हैं। तमाम नबियों की उम्मतों से आला उम्मत जो है वो ज़ात मुस्तफा की उम्मत है। ये भी सदका है जो ताजदार मदीना के करम का सदका है। तो आका जो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, कन्वर्सेशन बिटवीन द गॉड एंड मोसेस, वो क्या थी? वो ये थी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मौला करीम, तूने मुझे किताब भी अता फरमाई है, तूने मुझे उम्मत भी अता फरमाई है, और मेरी उम्मत ने जो कुछ भी मांगा तूने अता कर दिया है। और मैं ये दुआ करता हूँ कि ये शान जो मुझे तूने अता की है उससे पहले किसी को अता ना की होगी। तो रब ने कहा, बेशक मूसा, मैंने तुम्हें बड़ी शानों से नवाजा है, बहुत सी क्वालिटीज मैंने अता की है, ब्लेसिंग मैंने बहुत कुछ किया है। लेकिन सुन मूसा, तेरे बाद मेरा महबूब नबी आने वाला है, जिसकी उम्मत भी आला है, और वो नबी भी नबियों से भी आला होगा, उसकी शान भी आला होगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मौला करीम, कि मुझे वो उम्मत दिखा दे। कहा कि वो आलम अरवा में है, वो अभी आलम अरवा में है। कहा फिर मुझे उनकी आवाजें तो सुना दे। ये तो मोहब्बत थी ना कन्वर्सेशन की। तो रब सुन रहा था और जवाब दे रहा था, और कहा कि जब रब ने पुकारा है उम्मते मोहम्मद मुस्तफा, उन्होंने कहा लब्बैक लब्बैक, और उन्होंने लब्बैक का जवाब कहा। और रब ने कहा ये वो उम्मत है, मैं उस नबी के सदके से, मेरे नबी की उस गुलामी के सदके से मैं उन्हें ये मकाम अता करता हूँ कि इनके हाथ उठाने से पहले इनकी दुआओं को कबूल कर, इनकी दुआओं को कबूल करूंगा। तो मेरे नबी का ये भी तो मौजूद है। मेरे नबी की आमद से पहले नबी भी तस्करे करते हैं। अंबिया में से नबियों ने भी ये कहा है, बोला कि तूने हमें नबूवतें अता फरमाई हैं, हम ये चाहते हैं कि उस नबी का उम्मती भी हमें बना दे। ये शान है, दैट इज द क्वालिटी एंड द मैग्नेनिमिटी ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अंग्रेज जब ये कैरेक्टर को पढ़ता है, अंग्रेज जब मेरे आका की स्टडी को करता है, वो भी लिखने में मजबूर होता है, क्यों ना मजबूर हो कि खालिक कायनात और शान समदियत का मालिक है, वो भी तो जिक्र रसूल का एहतमाम करता है। मेरे रसूल का जिक्र फिर जमाने पे कैद नहीं रहता, किसी मौलवी पीर की हद में नहीं रहता, ये तो जमानों से पार हो जाता है, बल्कि जमाने मेरे रसूल के जिक्र के मुताबिक हो जाता है। इसलिए तो कहा, उस अंग्रेज थॉमस का ऐलान ये था कि प्रॉफिट मोहम्मद वाज द ग्रेटेस्ट बेनिफिशियर ऑफ द मैनकाइंड। He had not accomplished the savage and warring the reptile. He also gave birth to society which created the greatest revolution in the annals of mankind. So Allah proclaimed the sovereignty and the oneness of the Almighty Allah. ये तो है ऐलान उस अंग्रेज ने पढ़ के किया कि हजूर आका मदनी ताजदार मक्के के बसने वालों को हिदायत देने के लिए नहीं आए, बल्कि कायनात के बसने वालों को हिदायत का पैगाम देने के लिए। आज देख लो ना, न्यूजीलैंड की सरजमी पे मेरे रसूल का जिक्र हो रहा है कि नहीं हो रहा? मेरे आका के मोजज़ात का तज़किरा हो रहा है कि नहीं हो रहा? फितने वाले आते रहेंगे, आकर मिट जाएंगे, खुदा की कसम मेरे आका से वफा करने वाले बढ़ते रहेंगे। हमें कोई डर नहीं, हमारी निस्बत आला है, हमारा सरकार के साथ वफा का ताल्लुक आला है। और मेरी निस्बत तो ख्वाजा कासिम मौलवी की है, वो निस्बत कि जिसको ये इनाम मिला है, शहंशाह बगदाद के दरबार से इनाम मिला है। कोट गुलाशी वाले पीर साहब जो है, पीर मकसूद अली शाह साहब, जब जाते हैं कोट गुलाशी में, वहां से बगदाद में जाते हैं बैठ करने के लिए, कब्र से फैज हासिल करने के लिए 14 years जो है वो स्पेंड करते हैं वहां पे, एंड टू सर्व द ब्लेसिंग ग्रेव ऑफ द शहंशाह बगदाद। और आखिर में इनाम क्या मिलता है? ख्वाब में शहंशाह बगदाद आते हैं और उन्हें कहते हैं तेरा चिल्ला पूरा हो गया है, तेरा जो तेरी इबादत का जो हिस्सा है वो पूरा हो गया है, लेकिन तुझे फैज मिलेगा तो मेरे गुलाम ख्वाजा कासिम मौलवी के पास हिंद में चला जा। इट इज रिकमेंडेड, ये रिकमेंडेड है, हमारी उनके साथ निस्बत है। हम फिर क्यों ना सरकार के जिक्र करें जिनके सदके से हमें ये मकाम मिला है। आज दुनिया का सफर करता हूँ तो ये करम है तो ताजदार मदीना के करम का
پھر عاشق ڈرتا نہیں، وہ چاہے امریکہ ہو یا نیوزی لینڈ ہو، حضور کے ذکر کے میں مست رہتا ہے۔ آپ کی خوش قسمت ہو، یہ یاد رکھنا these moments are rememberable and valuable، اور آپ کی بخشش کے لیے سوال لے کے آئیں گے کہ آپ نے یہاں پہ آج سرکار کے معراج کے دن کو منایا ہے، سرکار کے اس گریٹسٹ میریکل کو منایا ہے، اور جو آپ اسے ٹرانسفر کر رہے ہیں اپنی نسلوں میں، تاکہ انہیں بھی یاد ہو کہ میرے نبی کا کتنا مقام ہے کہ رب اپنی ڈیوائن جلووں کو دکھانے کے لیے جو ہے سدرۃ المنتہا سے بھی آپ کے اپنے گرد کے جلووں کو دکھاتا۔ اگر وہ پیغام پہنچانا ہوتا نمازوں کا تو مدینہ شریف میں بھی آ سکتا تھا، لیکن یہ بتانا تھا آج کے مسلمان کو کہ رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے، اور یہ رحمتوں کو نوازنے کا سب نبیوں کو نوازی، لیکن ان رحمتوں کی انتہا جو ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ یہ وہ عظمت والا نبی، وہ رحمت والا نبی، وہ برکت والا نبی، وہ اندھیروں کو مٹانے والا نبی، وہ بے سہاروں کو سہارا دینے والا نبی، وہ ذرہ ذرہ کا نبی ہے، وہ ہر ستارے کا نبی ہے، وہ بیر و بر کا نبی ہے، حسد و حمد کا نبی ہے، ہر زمانے کا نبی ہے، ہر نبی کا نبی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ تو مرضی کسی ایک کو نہیں ملتی، یہ عاشق ہے جس کے دل میں سرکار کی محبت، اس سے پوچھو، خواجہ معین الدین چشتی سنگری سے پوچھو، دادا لہجیری سے پوچھو، یہ وہ صوفی ہیں، یہ دنیا کو اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کیا بلکہ دنیا کے دلوں میں گرا پیدا کر دیا۔ ہم ان صوفیاء کو ماننے والے، ان صوفیاء سے پیار کرنے والے ہیں۔ دادا لہجیری جب وہاں پہ بیٹھے لاہور میں، کیا دنیا کے اسباب تھے ان کے پاس؟ کیا دولت تھی ان کے پاس؟ کیا کوئی قبیلہ ان کے ساتھ تھا؟ کوئی آرم تھی ان کے ساتھ؟ ایک ہی آرم جو عشق کے مصطفیٰ سینے میں بسا ہوا تھا، وہ حضور کی محبت اور توحید کے ذکر کا پیغام ان کے سینے میں بسا ہوا تھا۔ اور اس راوی کے کنارے میں وہ مرد حق پرست بیٹھتا ہے، حضور کی نسبت کے ساتھ بیٹھتا ہے، کملی والے کی وفاؤں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ آج بھی دادا صاحب کو گزرے ہوئے 960 سال 960 years has been passed، لیکن آج بھی داتا صاحب کے ماننے والے آ رہے ہیں۔ اور اس راوی کے دوسرے کنارے میں بھی ایک بادشاہ دنیا کا ہمایوں لیٹا ہے جسے کوئی جانتا نہیں۔ آج شاید آپ کی نالج میں بھی بات آگئی ہوگی، لیکن داتا صاحب کو سارے جانتے ہو، جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ دادا لہجیری کو جو جانتا ہے ہاتھ بلند کر لے، ہاتھوں کو بلند کرے دادا، یہ دیکھیں دادا لہجیری کو جاننے والے، ہمایوں کو کوئی نہیں جانتا، ہمایوں دنیا کا بادشاہ تھا۔